Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram,
Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jila Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jila Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. नाम संकीर्तन की जय श्रीला प्रभुपाद की जय। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक शुक्रवार के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के सत्र में। और आप सब बहुत भाग्यशाली तो बहुत आभारी है। तो मुझे भी आशीष में बहुत स्वीकार करें जब तक हमारा जगह सीधा बहुत सुनाया गया कई स्थानों पर बहुत प्रसन्न मिला और तो मुझे बहुत ही आभारी है कि प्रभु जी ने अवसर दिया था। श्रीमान जो आए थे प्रभु जी की संपर्क से आप आए थे उनका भगवान मंडल और हम सब पहले सौभाग्य होता है जब करने का अवसर प्राप्त होता है। तो हम सब उनका स्वयं भी उनकी रुचि की देखते हुए बहुत देर तक परिणाम किया याद है। तो ये नाम रुचि तो उनको नाम जब करने का अवसर प्राप्त होता है तो उनको रोकना पड़ता है बीच तो जब रुकी अब तो बहुत देर तक उनका इतना रुचि है नाम जब करते हैं और बहुत शांत रुचि जो अच्छा श्रवण करते हैं वे ऐसे
तो प्रभु जी जितना भी कहीं कार्यक्रम होते हैं अगर वो बहुत ज्यादा कहीं पर निश्चित रूप से वो घटना पड़ा। आज दिन जब पुनः सेवा की यहाँ से जाकर और आगे अपना संग दिया और जब भी ऐसे भगवत श्रवण करते हैं तो उनकी जो चेतना है, उनकी जो साधना है, उनका जो पूरा भाव है, उनकी वाणी के माध्यम से, हमारे कर्मों के माध्यम से हमारे हृदय में निवास है और फिर उनको उनकी ऐसी प्रेरणा मिलती। तो हम सब मिलकर के उनका धन्यवाद करेंगे, उनका स्वागत करेंगे आज का। और जो आज पहली बार हम रहे हैं, जो पहली बार आए हैं, बैठे बैठे आपका नाम बताइए। रमेश बिहार से, कहाँ से? क्या आपका? हुड्डा बहुत से भक्त आए हैं आपको से प्रभु जी और जम्मू से स्वागत है। तो अखंड भारत की तस्वीर यहाँ पे बहुत ही सुंदर विषय है। तो बात कहते हैं कि किसी एक भगवान की भक्तियों के माध्यम से हम देश नहीं पूरा विश्व एक हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे केंद्र में आए हैं तो पूरा विश्व एक हो सकता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है, स्वागत। आपसे विनती कि आपको सत्ता में यहाँ पर आएगी, अपने और भी मुद्दों को लेकर के आएगी। हम लोग सब साथ में मिल करके दिव्य ग्रंथों के माध्यम से क्या है जानने का प्रयास करेंगे और साथ में मिलकर के उसको पालन करेंगे। आप सभी का स्वागत है। आप सभी भक्तों के जो परिवार आए हैं और विशेष रूप से प्रभु जी के स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। Hare Krishna. Again, welcome to our Friday Bhagavatam satsang. I'm not very qualified what Prabhuji told. I'm still struggling sadhaka, but somehow, I'm trying my best. Even today, it's mentioned 36, but I prepared 35. Still, I will continue 35 for your permission. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavater Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtake Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
Hare Krishna. Thank you for giving me an opportunity. Today आज का श्लोक इधर लिखा है 36, बट मैं एक श्लोक पहले का क्लास देव बारे में डिस्कस करेगा 35. तो यहाँ पे श्लोक लिखा है 36 से हम लोग जो है पहले दूसरे श्लोक के बाद अनुमान करेंगे। ये श्लोक पूरे सप्ताह के लिए है, तो इस सप्ताह में ये श्लोक लोग करने वाले याद रखिएगा। एक और भी बात जिसने लिखा है श्लोक में मंत्र बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर किसने लिखा है श्लोक बहुत सुंदर लिखा है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है और बहुत सुंदर शब्दों में है। धन्यवाद। Canto number 1, chapter 11, Lord Krishna's entrance to Dwaraka, shloka number 35. Saesha naraloke asmin avatarina swamayaya Reme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yata Saesha Naralokesmin Avatirna Swamayaya Reme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yata Ye Janara Lokesmin Avatirna Swamayaya Me Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yata Saesha naralokesmin avatirna swamayaya Eme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yatha Avatirna Swamayaya Eme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yatha Saesha naralokesmin avatirna swamayaya Eme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yatha Saesha naralokesmin avatirna swamayaya Eme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yatha Saesha naraloke asmin avatirna swamayaya Eme Sri Ratna Kutasto Bhagavan Prakrito Yatha. Word to word meaning. Sa, he, the Supreme Personality of Godhead. Supreme Personality of Godhead. Yesha, all these. Naraloke, on this planet of human beings. Asmin, on this. Avatirna, having appeared. Swa, personal. Eternal. Mayaya, causeless mercy. They may enjoy Sri Ratna, woman who is competent to become a wife of the Lord. Utasta, among Bhagavan, the personality of Godhead. Prakrita, mundane. Yatha, as if
it were. Translation and purport by His Divine Grace Abhacharna Aravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. Translation: that supreme personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his eternal potency and enjoyed himself amongst competent women as if he were engaging in mundane affairs. Repeat after me. That supreme personality of Godhead, Sri Krishna, out of his causeless mercy, appeared on this planet by his eternal potency and enjoyed himself amongst competent women as if he were engaging in mundane affairs. Purport: the Lord married and lived like a householder. This is certainly like a mundane affair. But when we learn that he married 16,100 wives and lived with them separately in each and every palace, certainly it is not mundane. Therefore, the Lord living as a householder amongst his competent wives is never mundane, and his behavior with them is never to be understood as mundane sex relation. The women who became the wives of the lords are certainly not ordinary women, because to get the Lord as one's husband is a result of many millions of births, tapasya, austerity. When the Lord appears on the different lokas or planets, or on this planet of human being, he displays his transcendental pastimes just to attract the conditioned soul to become his eternal servitors, friends, parents, and lovers, respectively in the transcendental world, where the Lord eternally reciprocates such exchanges of service. Service is pervertedly represented in the material world and broken untimely, resulting in sad experience. The illusion living being conditioned by material nature cannot understand out of ignorance that all our relations here in the mundane world are temporary and full of inebrities. Such relations cannot help us be happy perpetually. But if the same relation is established with the Lord, then we are transferred to the transcendental world after leaving this material body and become eternally related with him in the relation we desire. The women amongst whom he lived as their husbands are not, therefore, women of this mundane world, but are eternally related with him as transcendental wife, a position which they attain by perfection of devotional service. That is their competence. The Lord is Param Brahma, or the Supreme Personality of Godhead. Conditioned soul seeks after perpetual happiness in all places, not only on this earth, but also on other planets throughout the universe. Because constitutionally, a spiritual spark, as he is, can travel to any part of God's creation. But being conditioned by the material modes, he tries to travel in space by spacecraft and so fails to reach his destination. The law of gravitation is binding upon him like the shackles of a prisoner. By other process, he can reach anywhere, but even if he reaches the highest planet, he cannot attain that perpetual happiness for which he is searching life after life. When he comes to his senses, however, he seeks after Brahman happiness, knowing it for certain that unlimited happiness which he is seeking is never attainable in the material world. As such, the Supreme Being, Parabrahman, certainly does not seek his happiness anywhere in the material world, nor can his paraphernalia of happiness be found in the material world. He is not impersonal because he is the leader and Supreme Being among innumerable living beings. He cannot be impersonal. He is exactly like us, and he has all the propensities of an individual living being in fullness. He marries exactly like us, but his marriage is neither mundane nor limited by our experience. In the conditioned state, his wives therefore appears like mundane women, but factually they are all transcendental
transcendental liberated souls, perfect manifestation of internal energy. हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अनंत की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और स्वयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग या मानव में संसारी कार्यों में लगे हुए हैं। तात्पर्य, भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की भांति रहे, यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम यह जान लेते हैं उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबों के साथ मंगलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से सांसारिकता नहीं रहेगा। अतः भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ के रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं समझा जाना चाहिए। जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि-कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम ही हो सकता है। जब भगवान विभिन्न लोकों में या इस मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं तो वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, जननी, जनक तथा प्रियतम बनाने हेतु आकर्षित करने के लिए ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रतिदान करते हैं, इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप में दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। वो ग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ नहीं पाता कि हमारे यहाँ के संसारी संबंध क्षणिक हैं और उन्माद से भरे। ऐसे संबंध में निरंतर सुखी नहीं रह सकते, किंतु यदि यही संबंध भगवान के साथ स्थापित किए जाएं तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रह रहे थे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां न होकर उनकी दिव्य पत्नियां थी और वे भक्तिमय सेवा की पूर्णता के द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी है। यदि उनकी योग्यता थी, भगवान परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने-कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों के द्वारा बद्ध होने से वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करना चाहता है और अपने गंतव्य तक पहुंच पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैदी की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वह अन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वो सर्वोच्च लोक तक क्यों न पहुंच जाए, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है। किंतु जब वह होश संभालता है तो ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह इस भौतिक जगत में कभी भी प्राप्त होने वाला नहीं है। अतः सर्वोपरि व्यक्ति परब्रह्म कभी भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, नहीं उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं है, क्योंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति है। अतः वे निराकार नहीं हो सकते, वे हमारी ही तरह है और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीवों की सी प्रवृत्ति पूर्ण रूप में पाई जाती है। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह तो संसारी है, न हमारा बद्ध अवस्था के अनुभव से सीमित है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्त आत्माएं हैं जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां। रूपम सर्वजातम सगुणम सजीवम सावधूत परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण भगवान ललित श्री विष्णु। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्ते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तः
Rase Vrindavaneshwari Vrishabhamsute Devi Pranamami Haripriye Pancha Krapa Sindhu Evata Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Shrudaya Krishnustha Srimate Bhaktivedanta Namaste Saraswate Devi Gauravani Pachani Visheshunyamadi Pashatya Deshatarani Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gasadhara Sivasadi Puravatar Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. Welcome to again our Friday satsang, which is Bhagavatam early morning Friday to here is a very very auspicious way to start the weekend. Actually, I'm not fully qualified, but on the request of Prakash Prabhuji, Arjun Krishna Prabhuji, actually Arjun Krishna Prabhuji given me this sloka today, and I was just meditating on that. And still, I'm continuing from that sloka, permission of Prabhuji, and I will try my best with whatever I heard, whatever I was reading and hearing, to discuss this sloka. तो हम सब आज ये शो पे चर्चा करने वाले नमस्कार के कार्य में है स्पेशल अलग में मोर Actually, Lord is coming to Dwaraka, and Dwaraka's queens are discussing these verses now. भगवान श्री कृष्ण द्वारका में प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ पर जो उनकी पटरानियां हैं And today's shloka is very very important. It is many times Lord's activities and birth never easy to understand. They are quite extraordinary. When Krishna comes in the material world, he engages many activities, some which is all normal, some are which is very very abnormal. तो भगवान के सारे लाभ हैं वो असाधारण है। तो भगवान इस जगत में आते हैं और नृत्यलीला करते हैं, कुछ यहाँ लगते हैं कि बिल्कुल सहज जैसे सामान्य जीव करते हैं वैसे लाए हैं, और कुछ जो हैं वो भगवान की बहुत अद्भुत होती है। Means some are extraordinary, some are super extraordinary. कुछ असाधारण होती हैं और कुछ सर्वोत्तम असाधारण होती हैं। Lord comes in this material world and he comes with even when he appears with his 4 hands, and he having Chakra Chakra Gada Padma, and his Narayana form, he appears to in front of Devaki and Vasudeva. भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए देवकी वसुदेव के समक्ष मथुरा में, तो भगवान चतुर्भुज रूप में पहले आए, चतुर्भुज के भगवान के नारायण रूप में भगवान प्रकट। Then himself he is become small Gopal form, child form, and then he instruct to, before that himself instruct to Vasudeva to take me to Vrindavan, Gokul, where because Kamsa will come and kill. See, here itself we very difficult to understand. He is supreme personality of Godhead, and he is he's not fearful, but he is just himself is telling to, because he want to do some other pastimes. तो भगवान प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में, उसके पश्चात वसुदेव की आज्ञा पर फिर से 12 चतुर्भुज प्रकट होते हैं और फिर उनको आदेश देते हैं वसुदेव की आप को देवी शक्ति। तो भगवान हालांकि इससे भयभीत नहीं होते, फिर भगवान को सौर्य करने की गोकुल में, इसलिए वो कहते हैं कि वहां पर देवी शक्ति। And it's like some ordinary leelas, like like coward boy, it's like most of the village who are here, we all herding the cows when we are small. Same Krishna is performing this type of this leela, is taking cows to the herding and taking care of them. Lot of other activities with cows also he is doing. और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बाल बाल से
It's like ordinary. He's stealing butter. A lot of other mischievous activities we all know is doing with gopis and playing with gopas. Lot of activities he is performing. और ब्रज में भगवान एक साधारण मनुष्य से अच्छा स्वागत बात के ऐसे भगवान गोपियों के साथ में गोप के साथ में लीलाएं करना ब्रज में अमन. These are the activities which human can perform. Some activities, even in he is small, he is performing, which is like inhuman activities. Human cannot perform. तो इसके साथ में भगवान कुछ ऐसी लीलाएं करते हैं बचपन में बालिक आदमी की जो कि किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है और सारा लीलाएं करते हैं. When he was baby, it's a few months, he kills Putana. He kills many other demons. जब भगवान छोटे बाल रूप में थे तो क्या किया? सबसे पहली जो राक्षस थी कौन थी? पूतना कवच कर दिया. इतनी बड़ी राक्षस थी वो. Even Putana, when she died, her body was so large. It is explained. So much heavy. It is huge. It is like a mountain. और बहुत विशाल शरीर था उनका, कई मील लंबा शरीर था उनका, इतना बड़ा शरीर और छोटे से बालक तो भगवान को. It is very difficult to understand. And then many other leela. Also he lifts Govardhan with his small finger. और जब भगवान कुछ वर्ष के थे तो उन्हें 4-5 वर्ष के थे तब भगवान ने जो है वो गोवर्धन की लीला का पूरे गोवर्धन लगभग 20 मील लंबा चौड़ा था उठा के भगवान ने. This leela is very difficult to understand. See, he is small baby, but same time he is performing all inhuman activities. ये सारी लीलाएं भगवान ने कुछ ये प्रस्तुत करते हैं कि भगवान के सहारे वाले नहीं. Also, and then he means people, normally they think that Krishna is doing all, because in the mundane platform, in the material platform, he thinks that Krishna is doing all these activities, and it feels like he's not a supreme personality of Godhead. He's like, and he's same like us. लेकिन जो भगवान की और लीलाएं हैं जिससे भगवान कुछ सहज रूप से करते हैं किसी और अन्य भगवान की जैसे, इसलिए बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं. तो कोई ये कहता है कि कृष्ण की परमेश्वर भगवान वो कहते हैं कैसे भगवान को बाहर से बात करने का करते हैं. Also, few are believes in his childhood activities, but when he associated with gopis and he did that Rasa Leela and he married 60,000, this they will not believe. और इसको तो विश्वास करते हैं लोग, लेकिन जो भगवान की ये असाधारण लीलाएं हैं, इससे दूसरे गोपियों के साथ कितनी गोपिकाओं के साथ में रासलीला करना, कितनी द्वारका की लोग रानियां हैं उनके साथ भगवान ने स्वयं करके और बात किया, उनके महल बनाए, ये सब तो विश्वास नहीं. Mainly, like Lord is married 16,108, which is this is when we in a mundane platform we are understanding, we cannot understand. तो भौतिकवादी चेतना से इसको समझना कठिन है कि भगवान कैसे इतने लोगों के साथ कैसे बात. Even even Indians it is difficult. Even British, when they come to India, they also were they were trying to Indian culture was so strong, and they were studying this Vedas, Krishna Leela, and they found Krishna is God, but they are we are telling, but then they reading this Krishna book. Like there is he is married 16,108. No, he is not God. He's not what type of a God. He is marrying too many girls, and is maybe a sex god like that. Many other things they are started to or propagate. तो इसी प्रकार जब यहाँ से पाश्चात्य में हम लोग देखा जाएगा और जब वो आए भारतवर्ष में उन्होंने बहुत अखंड किया वेदों का शास्त्रों का, तो जब उनको ये पुस्तक मिली और हमारे बारे में जो सुनाने की सोचा सवाल से तो ये कैसे हमारा तो बहुत कामों में कोई लग रहे हैं अनुवाद की. There is one small pastime means it is with the devotees in Western countries, like our devotees, they are very fond. We are all distributing the Srila Prabhupada's books, Bhagavad Gita, Bhagavatam on the streets. Same time, when the devotee is distributing with a small table, there is even another street. There is this Christian nuns. They are also coming and they also distributing their books.
पाश्चात्य स्पेन की घटना है, वहां पर एक बार मुसलमान करते रहते और उसी समय दूसरी तरफ से जो हमारे क्रिश्चियन वो भी वहां पर कुछ बाइबल और And they always trouble into our devotees, and they're telling you don't distribute these books. Especially Krishna book was that time famous, and in Krishna book we know that these all pastimes Krishna's is that they're telling no, you don't distribute. You are not preaching properly to God. God is not to be supposed not to be married 16,100 like this. They were not allowing devotees to distribute the books. तो उन्होंने कहा माता जी देखिए आप यहाँ पर कृष्ण है भगवान की नाम वर्णन किया गया है इसको आप इसको करिए स्थान क्योंकि ये बड़ा अनैतिक भगवान का अनैतिक व्यवहार है कैसे सकता है कि भगवान कितने राजनीतिक साथ व्यवहार कर रहे हैं किस तरह की चीजों को यहाँ पर पालन कर दिया And devotees are very determined. Even whatever the problems, still they were distributing the books. लेकिन भक्त बड़े संकल्पित This Christian nuns, they taken this issue to the court for the legal action. और तब ये जो है क्या किया उन्होंने उन लोगों ने मिलकर के इस विषय को इसके ऊपर केस कर दिया और ये अदालत में गया मामला. And they calls their judge because they call for both parties. Now it's with the judge. They call the devotees. They call this Christian nuns also. They are 10-15. They also present, and a few of devotees of ISKCON also they present. तो दोनों पार्टी के लोग वहाँ पर बैठे हुए अदालत में एक तरफ जो है वो नंस थी क्रिश्चियन नंस होती हैं और एक तरफ कुछ भक्त लोग थे और अपने पक्ष को रख रहे थे वहाँ. And the judges asked to nuns actually what seems to be problem, and nuns they answers these people are distributing books of God, books about God. And then he is asking, what is the problem? This book is they are distributing. What is the problem? Then, if they are telling, if you read Krishna book, in the Krishna book, it is mentioned that Lord is married 16,108, which is women's, which is not ideal, which is means Lord is immoral, and it is not ideally for a God. God means not to do all these activities, and it is not to distribute. Means it is there explaining God in a different way. It is not true. तो न्यायाधीश ने पूछा उससे कि आप बताइए अपना पक्ष रखिए उन्होंने उसको पूछा कि क्या समस्या है उन्होंने बताया कि समस्या ये कि ये भी पुस्तक पढ़ कर रहे हैं भगवान की बातें भक्ति करते हैं और इनकी जो पुस्तक है उसमें भगवान को बताया जा रहा है कि भगवान जिसको जा रहे हैं जब ऐसी पुस्तक बाहर जाएगी तो कितने अनेकता पहले लोग किस प्रकार का भगवान के बारे में विचार करेंगे इसे मना करना चाहते हैं. Then judge now asking about devotees. So what is your opinion? And these devotees they ask judge, can we ask few questions to none? तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने पूछा इनसे जो भक्त लोग थे कि आपकी क्या इसके ऊपर आपका क्या प्रतिक्रिया है कैसा आरोप कर रहे हैं आपके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं बचाव पक्ष. उन्होंने कहा कि महोदय मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ बोला मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके समक्ष बोले पूछिए. Then nuns told yes, okay, no problem. Then they ask like when you take your non-re vows, what do you have to vow? तो उन्होंने जज साहब ने उनसे पूछा न्यायाधीश महोदय ने कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है कुछ प्रश्न पूछिए आपसे बड़ा कुछ. उन्होंने प्रश्न पूछा जो भक्त लोग थे नंस से कि आप जब नंस बनती हैं नंस समझते हैं आप लोग जैसे हमारे ब्रह्मचारी होते हैं लोग वैसे वहां पर माताएं होती हैं वो अपना पूरा जीवन समर्पित करती हैं विशेष कार्य सेवा के लिए. उन्होंने पूछा कि जब आप जिस दिन नंस बनती हैं आप जिस दिन आप ये वेश धारण करती हैं और ये संकल्प लेती हैं तो उस दिन आप क्या वचन लेती हैं क्या संकल्प करती हैं कैसे आप नंस बनती हैं. Then they are telling we have to believe in the God, we have to marry one person, only one person, like that. They tell us we have to marry only one person. उन्होंने कहा उस दिन हम लोग वचन देते हैं कि अब जीवन पर्यंत हम जीवन पर्यंत किसी और से विवाह नहीं करेंगे केवल एक व्यक्ति से हम विवाह करते हैं और पूरा जीवन हम उसी को ध्यान में रख करके वही हमारे पति हैं इस पर बताते हैं.
Then the devotees are, they're intelligent. They're asking, who is that? And they tell he is Jesus Christ. तो उन्होंने पूछा भक्त बड़े तो होते हैं तो सब ज्ञात ऐसे ऐसा कुछ है तो भक्त ने पूछा कि वो जो आप बोल रही हैं आप सब नंस हैं हमको पता कि आपने विवाह नहीं किया है आप कह रही हैं एक पति से बेटा आपने एक पति से विवाह किया है तो कौन है आपके पति ऐसे पूछा आपके पति कौन है तो उन्होंने कहा कि मेरे हम लोग के पति हम लोग जिस नंस बनते हैं उससे हम लोग जीसस क्राइस्ट जो हमारे लॉर्ड उनसे हम विवाह करते हैं ऐसा हम संकल्प करते हैं. And no one else, only one they marry. Then devotees, they ask nuns, you also marry Jesus? She also marries. Like that 10, 15 they ask, they all tell yes, we all marry Jesus. Then devotees tell, in the world, there is maybe thousands of nuns are there. That means you all marry to Jesus. What is the Krishna is marrying 16,108? You are marrying, your God is marrying more than 16,108. तो कभी देखिए जितने यहाँ पर नंस हैं मतलब इसलिए आप सब लोगों ने ऐसे कर दिया तो हम पर सब ऐसे कर दिया पूरी दुनिया में कितने नंस हैं बड़े लाखों की संख्या में तो बड़े सोचिए ये सभी लाखों नंस ने ये विवाह किससे किया है जीसस क्राइस्ट भगवान से तो जब इतने लाखों अभी आज के समय में लाखों नंस जीसस क्राइस्ट से विवाह कर सकती हैं तो हमारे कृष्ण का 1608 वर्ष विवाह किया तो उससे क्या Judge also start to laugh and no more argument. Case was dismissed. तो न्यायाधीश भी हंसने लगे और वो केस को डिसमिस कर दिया गया ये क्या तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. It's very simple to understand the God, it is Krishna is like that, if you understand Krishna is very easy and भगवान की सब अंश हैं और सब अंश में हम लोग सुनते हैं साथ में आपको बताया गया इस तस्मारे के अनुसार भगवान साफ काम सबकी पति होता. That's why mundane people not understand Lord's activity and they compare our activities with the mundane situations and to sometimes they think this is all activities are ordinary and they will not, they tells Lord is an immoral, this type of implication many they do that one on the God. संसारी व्यक्ति इस प्रकार से अपनी दर्शक चेतना से जब मान की कार्य लाभों को समझने का प्रयास करते हैं और चेतना निश्चित होती है वो अपने जैसे ही जो निश्चित उनका भाव है उसी प्रकार से वो भगवान को देखते हैं. Actually, Krishna does not need to follow these mundane rules and regulations, but he follows as to put us an example. He is no need to follow all these mundane rules. भगवान के लिए कोई भी कार्य और कोई भी संसार के लिए संसारी नियम के लिए बात है लेकिन फिर भी भगवान जब यहाँ पर आके करेगा करते हैं तो समाज में एक सभी लोकाचार में सभी भगवान करने के लिए भगवान स्वयं ही ऐसे कार्य करते हैं. Because if it is Lord is following this material laws, then he is not supreme personality of Godhead. It is not possible because it is mundane. He is not obliged to that one. भगवान संसारी नियमों के परे है. भगवान को सांसारिक नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं फिर भी भगवान सब भगवान प्रस्तुत करने के लिए ऐसा करते हैं. And it is very difficult to such understanding this type of Lord's Leela. इसलिए भगवान की ऐसी लीलाओं को समझना बिना आचार्यों की टीकाओं के माध्यम से बहुत कठिन असंभव है. Let us one more discussion with the Srila Prabhupada. I just to say, like once Srila Prabhupada was taking darshan in the Vrindavan, and there was many guests were there. Then one guest, after Prabhupada Parikram, he asked, Prabhupada, Krishna is an immoral person. एक अतिथि जो वहां पर पूछा श्री गोपाल जी भगवान जो आप कृष्ण बोल रहे हैं भगवान बोल रहे हैं कृष्ण का जो आचरण है वो बड़ा अनैतिक. Prabhupada asked, why is that? गोपाल जी पूछा ऐसा क्या आपको अनुमति लगा उनके व्यवहार में
Then this guest is telling Krishna married more than 16,100 women. What kind of God he is? He is not setting right kind of moral. So many women, etc. like that. तो काफी देखिए 16,108 प्राणियों से विवाह करना और रासलीला करना वो बेगाओं के साथ में ये सब कुछ पढ़ने को है. Then Srila Prabhupada thinks a few seconds and he asks, do you believe Krishna is a God? कुछ समय प्रभुपाद जी चुप रहे, शांत रहे, कुछ बाद में पूछा, क्या आपको लगता है कि कृष्ण भगवान है? नहीं. Guest say, yes, I believe Krishna is God. उसने कहा कि ठीक है, ये बात है, सब लोग कहते हैं, मैं मानता हूँ कि भगवान है. Then Srila Prabhupada, do you believe everything is property of God? तो फिर वो कहते हैं वो भगवान है, तो भगवान होने के नाते सब उनकी संपत्ति है, ये मानते हैं? He tells yes, everything owned by God and he is a supreme person. तो कहा कि हाँ, क्योंकि वो भगवान है, तो सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है, उसके वो मालिक हैं. We have to further to hear very important. If you believe that, are you married? Prabhupada is asking. तो कहा कि जब ये विश्वास करते हैं, आप बताइए कि आपने विवाह किया है? He shows yes. See, next to him is yes. This is my wife. He shows Prabhupada. तो कहा कि हमने विवाह किया है, और मेरी ये पत्नी है. Prabhupada says, if everything is property of the Lord, God Krishna, then your wife is also property of God Krishna. तो कहा कि जब सब कुछ भगवान की संपत्ति है, जिसको आप अपनी पत्नी बोल रहे हैं, ये भी भगवान की संपत्ति है. Prabhupada, he is asking, do you agree? प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि आप सहमत हैं? Person is now a little bit sure. He told, and he told yes. वो कहे कि हाँ, वो दिमाग का. Prabhupada is telling, well, in fact, you are the immoral person. Now Prabhupada is telling, in fact, you are the immoral person because you are taking God's property. Since everything belongs to God, since all women belongs to God, since it is Lord's property, you are the immoral. प्रभुपाद कहा कि आप अनैतिक हो, भगवान नहीं. पूरी संपत्ति भगवान की है, आप उन संपत्ति का उपयोग करने का प्रयास कर रहे हो, आप अनैतिक भगवान. Yeah. Because he is telling further, Prabhupada, Lord can do anything. What he can he can do. And you claim this lady as your wife. You are immoral. Activity immoral. Actually, she belongs to Krishna. Like that. The Prabhupada explains. Then this gentleman can't ask further questions. प्रभुपाद इस प्रकार से कहा तो वो फिर जो सब कितने वो कुछ नहीं कुछ बात प्रभुपाद कहा कि आप अनैतिक हो. सारी संपत्ति भगवान की है, सारी संपत्ति भगवान की उपभोग के लिए बनी है. आप अगर कुछ उपभोग कर रहे हो तो ये आप उनसे जुड़ा है, तो उनके पास कुछ और भी. See, Prabhupada is made that person first believe in God, then he asks the questions further. First, they make his understanding or not understanding his belief, because he says he's believing God, Krishna is a God, but he is thinking he is immoral. जिस प्रकार से भगवान की समझ को ठीक किया कि आप उनको मान रहे हो भगवान है, कि ऐसा भगवान नहीं बोल रहे हो, और सबको मान देने के नाते सभी See, that's what understanding the Krishna is very, very easy way, but it is difficult if you are not become a devotee of Krishna. It is very difficult. But if you are not a devotee of Krishna, it's very difficult to understand. We feel all these things, different means wrong perception we always get. इसलिए भगवान कृष्ण को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है. केवल भक्ति भाव से भगवान को समझ पाते हैं. आचार्यों के पास नहीं तो अपने स्वयं के इस कलुषित चेतना के द्वारा भगवान के कार्यकलापों को समझने का प्रयास करते हैं. That's what even Prabhupada is clearly writing. The women who become the wives of the Lords are certainly not ordinary women. प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि जो स्त्रियां यहाँ पर भगवान की पत्नियां बनी हैं, वो सब कोई साधारण स्त्रियां नहीं. Because to get Lord as one's husband is a result of many millions of births tapasya. उन्होंने बहुत कहते हैं कि जो इस
भगवान के पति के रूप में प्राप्त किए हैं भगवान को, तो कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम भी हो सकता है। See, actually, it is for us, do little austerity is very, very difficult. Like, especially like getting up morning, chanting the holy name. It's very, very difficult. But here is Prabhupada writing in millions, but austerity has performed to become Krishna's wife. हम लोग को एक जीवन में कुछ समय के लिए, एक जीवन में भी जब मार्ग होता है बस कुछ वर्षों की तपस्या करनी पड़ जाती है। सुबह उठना, जप करना, भक्तों का संग करना, सप्ताह में प्रतिदिन अपनी सेवा करना, श्रवण कीर्तन करना, कठिन पड़ जाता है। और यहाँ पर की जो रानियां हैं, राजा जो पूर्ववर्ती कालों में कोटि कोटि जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों की तपस्या के पश्चात उनको ये सौभाग्य प्राप्त। And even we see even in the Rama Leela, the Lord is in the forest, and then he came across these sages and rishis, and when they performing lot of austerities, and they want to, they want to become a not instead of Dasya Rasa, they want to see Lord in Madhurya Rasa. तो ऐसा बताया कि भगवान राम की लीला में भगवान कृष्ण पर्वत यहाँ से जब गुजरते थे तो वहां पर जितने ऋषि मुनि थे वो भगवान के आकर्षण को देख करके उनके मन में ये इच्छा है कि मैं भगवान की सेवा जो है और अंतरंग रूप से उनकी माधुर्य भाव में उनकी सेवा कर पाऊं, ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त हो। So Lord, to please these devotees and their devotional service, they becomes the pins of the Lord during the Dwapara Yuga, the Krishna Leela. और तब भगवान चूंकि पिता भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आए थे, भगवान श्री रामचंद्र जी, तो उन्होंने अपने भक्तों की इच्छाओं को समझ करके उनको, क्योंकि भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इससे उनके मन में जो इच्छाएं थी भगवान की सेवा करने की मातृ भाव में, उसको कृष्ण लीला में परिपूर्ण किया। इस प्रकार से वही सब ऋषि जो थे करोड़ों वर्षों की तपस्या के पश्चात वो भगवान की पटरानी बने। And these all are the arrangement of transcendental will of the Lord. It is only through the will of the Lord these all are possible. ये भगवान की इच्छा के अनुसार और निश्चित रूप से भगवान के भक्तों की जो शुद्ध प्रार्थनाएं थी भगवान ने स्वीकार किया और आनंद किया। And like that, Krishna's this Leela or Krishna's activity is very, very difficult to understand a mundane person. इसलिए भगवान की लीलाओं को उनके महानता को जाने बिना और शुद्ध भक्तों के माध्यम के मार्गदर्शन के बिना समझना। Krishna himself says in Bhagavad Gita, how can we understand the Krishna? Actually, sloka number 11.54, Krishna says, I will read only that, I wrote here that translation of sloka. My dear Arjuna, only by undivided devotional service can I be understood as I am. तो भगवान गीता के 11वें अध्याय की 14वें श्लोक में केवल भक्ति के द्वारा ही आप मुझे जैसा मैं हूं वैसा समझ सकते। Standing before you and can thus be seen directly, only in this way can you enter into the mysteries of my understanding. और उसी प्रकार से आप मुझे तत्व को केवल आप मुझे जान सकते हो, मुझे देख सकते हो और जो मेरे कार्यकलाप की जो गुणता है उसमें प्रवेश कर सकते हो। The Lord is clearly telling only through the devotional, undivided devotional service, only we can understand the mysteries of the Bhagavan. भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? केवल और केवल शुद्ध भक्ति ये संभव है। भगवान ने कहा कि कई बार केवल भक्ति के माध्यम और कोई भी कार्य। Even in this series of sloka there, even 53, 54, and before also, if you all read, Krishna is nicely explaining to Arjuna that how, because before that also Krishna shows Vishwarup and then 400 Narayan form, then 200 form, and then he is telling only through this unconditioned devotional service only possible to understand his mysteries.
तो भगवान ने यहाँ पर जो अपने विष्णु विराट रूप में दिखाया श्लोक उसी पश्चात भगवान जब रूप में आए, फिर अपने दुर्ग रूप में आए अर्जुन के समक्ष। उसके बाद का ये विधान चल रहा है, तो भगवान यहाँ पर साबित करते हैं अर्जुन मेरे किसी भी रूप को और अंतर्निहित रूप से सभी रूप का स्रोत है, इसके बारे में आपको जानने के लिए जो विधान होता है। Also, Prabhupada here mentioned that Lord incarnates to this material world to give pleasure to his devotees. और कहते हैं प्रभुपाद जी और बताएगा कि भगवान विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद देने के लिए इस जगत में काम करते हैं। Also, this conditioned soul, other conditioned souls, which are so many thousands of years forgot Krishna, at least seeing Krishna's Leela, understanding Krishna's Leela, and hearing Krishna's Leela, at least they will get the mercy. That is the compassion of Krishna, and he comes and he shows all this Leela, that when we understand and we understand these Leelas and we surrender to Krishna, that's what his purpose to come to this material world. तो भगवान उसके साथ ही साथ में इसलिए भी आते हैं जो लीलाएं करते हैं यहाँ पर उनकी लीलाओं को श्रवण करके, उनको बारे में वर्णन करके, श्रवण करके, कीर्तन करके जो समान जीव हैं वो भी परोपरे, वो भी इस भाव सागर से पार हो। And that is especially even in the other this is the one of, and even in the Kali Yuga material, especially like we all chanting this holy name, many are not believing on the holy names. जैसे कली में बताया गया कि नाम की महिमा है, भगवान के नाम को जप करने के लिए संशास्त्र में बताया गया, लेकिन बहुत से लोग विश्वास नहीं। It's very difficult. That's like mundane people who are involved in this samsara of different activities of our sensual activities. It is very, very difficult to even understand this purpose. Yuga dharma of the Kali Yuga. तो संसारी लोग इस पर्यावरण की दृष्टि में रह रहे हैं, उनके लिए इस कलियुग के युग धर्म को भी पर विश्वास करना, समझना वो उनके लिए संभव है। That's what even Chaitanya Mahaprabhu, Krishna himself, he comes to Kali Yuga and he himself propagate the Yuga dharma. और इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण आदि नाम और अपने आचरण से सबको सिखाते हैं किस प्रकार से सब लोग जो बुद्धिमान हैं वो निश्चित रूप से इस संकीर्तन को निभाते हैं। Means that is the Lord's mercy, Lord's compassion on these fallen souls. Like even this Kali Yuga, very, very fallen age, but still he comes and very simple process is, that is Yuga Dharma. Again, he is giving to this fallen souls, like Prabhuji who are intelligent, they will take and they become, purify their existence. तो भगवान की बड़ी कृपा है जो जीव विमुख हो चुके हैं, परे हो चुके हैं, उनके लिए भगवान स्वयं आकर के इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं। सबको नाम की महिमा, नाम से नाम लेने का प्रयास, सबको बोले कि आपके नाम केवल नाम के द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। That's what it is clearly telling. Kali Kale Nama Rupe Krishna Avatar. Means Kali Yuga में Kali Yuga Krishna's avatar, Krishna comes as in the form of name. तो बताया गया शास्त्र में कली काल में भगवान कृष्ण का नाम, कली काले नाम रूपे कृष्ण का भगवान उसी रूप में प्रकट हो गए। Because Krishna's name and his form there is no difference. Abhinatvam nama namine. Is there is no difference between Krishna's name and Krishna. That is the how we need to. The scriptures are understand, making us understand. तो बताया गया कि भगवान और भगवान का नाम से कोई नहीं। And now for us to for these fallen souls, we just reading the Bhagavatam or reading Bhagavad Gita very difficult to understand. But even in the Bhagavad Gita itself, a vidhi is given. Tadvidhi pranipatena pariprashnena sevaye उपादेशन्ति ते ज्ञानम upadeshati te jnanam jnanina tattva darshina. Means like we have to go and surrender to a person who already know the Krishna and he following all the rules and regulations to for the Krishna, and he is accepted Krishna as the supreme personality of Godhead and he follows all the requirement. For such a person, such a guru, we have to take him as a spiritual master because as a tattva, he understands as a truth.
And we have to understand, and we have to ask him, humble with the attitude. We have to ask him questions and try to understand these mysteries of Krishna. देखा जाए तो भगवद गीता प्राप्त करना भागवत करने को सहज नहीं है। इसकी विधि गीता भगवान बताते हैं कैसे करना होगा, अपने स्वयं के प्रयास से नहीं। हमें एक ऐसे गुरु की शरण में जाना होगा जो दूरदर्शी है, जिन्होंने भी अपने गुरु से भी ऐसी विधि से सीखा है। ऐसे गुरु के पास जाकर के विधि क्या है, बड़ी बातें हो करके उनकी सेवा करते हुए उसके कैसा करके इन तत्वों को समझना। Its conclusion is that we can understand Krishna's pastime by devotional service, rendering service in a humble attitude. Arrogant attitude like Duryodhana, it is not. An example like Duryodhana, I am telling, it is very difficult to understand. तो इस ज्ञान को विधि को बड़े ही विनम्र भाव से गुरु के शरण में जाकर के शरणागति के माध्यम से समझना होता है। जो अहंकारी व्यक्ति है, गर्वित व्यक्ति है, वो ज्ञान को Like example is like arrogant attitude person. His example is like Duryodhana. Like Duryodhana, when Krishna went to this before war as a messenger to not to become war, then Duryodhana arranging him a big feast. He was arranging everything in the golden plates, and he's using all very expensive items to prepare the bhoga for Krishna. But and he was so arrogant, we all know Duryodhana. He want Krishna to come, but Krishna not goes to him. और ऐसे गर्भ में अहंकारी व्यक्ति का उदाहरण जो है वो दुर्योधन, जहाँ पे इस प्रकार से भगवान जब वहाँ पर गए थे सभी दूत के लिए, सभी संदेश के लिए, तो दुर्योधन के भाव में इस प्रकार का चेतना चुटी के में को पास हो गया। But same time, साथ में वो इतना कुछ ऊपर तक भी करना चाहते थे छोटे बड़ा आने के लिए, भगवान अंतर्यामी है, सब जानते हैं भाव को, उन्होंने भगवान ने कुछ ग्रहण नहीं किया। Same Lord went to Vidura's house. Vidura don't have anything, but there actually he goes, and from Vidura's wife, he eats peels of the banana. That is the Lord per se. And then when Vidura seeing, he cries. Supreme Personality of God had come to his house. See, understanding, Duryodhana as well as Vidura, he cries there. Situation, seeing that situation. और दूसरे भगवान कृष्ण जो जाते थे विद्वानी के यहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ विद्वानी जो है वो इतने भावनाएं हो जाती है भगवान को लेकर के, इतनी उत्साहित, इतने आनंद हो जाती है, अश्रु हो रहे हैं, और उस अश्रु को पता नहीं वो क्या देगी भगवान को अर्पित कर रही है, केला ऋषि कर रही है और केला ऋषि का भगवान खा रहा है। That's what the main conclusion is. Our attitude should be very, very humble and tolerant, and we have to, in a mood of service, we have to do service mode. When we are doing this service of devotional service in that humble attitude, Krishna himself, he will reveal us his mystery in his leelas, whatever we have, and we understand it, who is Supreme Personality of God and Krishna, and we can consider take him very easily later on. इसलिए बहुत ही विनम्र भाव में इनको भगवान की सेवा में पूरा पड़ेगा। इस समस्या में हम विलास को सुंदर नहीं है, उनका लक्ष्य है। जब इस प्रकार की विनम्रता वाले भाव में हम भगवान को शरण लेते हैं, गुरु मानव से तब जाकर भगवान इस प्रकार का आराधना और भगवान की लीलाओं को हमें समझने की शिक्षा प्राप्त है। भगवान की कार्यकला लीलाएं भगवान करते हैं, तब उनको समझने। Even after coming to the devotional service, understanding not to become like Duryodhana, we must be like Vidura and their way. So, इसलिए हम लोग को दुर्योधन की जैसे नहीं करना चाहिए, भक्ति लाने के पश्चात भी भक्ति में सेवा का भी करना चाहिए, बल्कि हमको गुरु की जैसे करना चाहिए. And much more to see, last, that's what Prabhuji also told. It's so blissful last 1 week to tell, last week, our Aditananda Prabhuji was there, Thursday, Friday, Saturday. Even, one more point I want to tell this week, it was so blissful, even I was sharing, because we kept our beloved Guru Maharaj, Jayapataka Swami Guru Maharaj, to offer 6,000
Bhagavad Gita. It is not easy. Anyway, we've kept that goal and then we have to achieve. We are trying to engage so many devotees. Full week we are trying to engage. Somehow we are telling, please do some service. Even I myself, I ask many of my friends, even they are not devotees. See, here very important, many of they are not devotees, but they're ready to give some charity. But we need to ask them. We may sometimes afraid of why we have done. No. I felt that when we are asking, they come up. They give that, like Bhagavad Gita means, even we are telling it's for tribal areas will be distributed and like in the schools, they are very happy. But there are acceptance as there. And that 1 week, it was made so much. I felt it is so nice to that service to engage. Not only me, actually, many other devotees all are engaged, and many are offered the service. And even to tell, yesterday evening we were able to cross, and we reached morning is 6,300 is around Bhagavad Gita was there. इस सप्ताह में आप सभी आए हैं तो वहाँ पर बड़ी जनता का महाराज की राष्ट्रीय महोत्सव था और कई स्थानों पर श्रीमान के साथ में गुरुवार को शुक्रवार को शनिवार को हम सबने बड़े रूप से आयोजित किया नाम कवि और महाराज और महाराज की राष्ट्रीय में हर वर्ष यहाँ से कई पुस्तकें का प्रसिद्ध होता है और यहाँ पर लोग साइन होकर के संकल्प लेते हैं महाराज की सेवा बड़ी नहीं है जो आदिवासी क्षेत्र है वहां पर जाकर संवर्धन करना निःशुल्क तो उसके लिए कई लोग यहाँ पर दान देते हैं तो इस बार का जो संकल्प था वो पिछली बार से ज्यादा 6,000 पिछली बार 5,000 था इस बार 6,000 तो प्रभु बता रहे कि प्रभु अंकल बहुत से भक्त हैं सब लोग सेवाओं में लगे थे और कई लोग के पास जाकर के और बोलते थे जो लोग भक्त नहीं है वो भी भक्त नहीं है लेकिन दान देने के लिए विद्यादान देने के लिए तैयार इनमें जाना होगा उनके पास वो उनके पास जाकर उनसे विनती करते हैं इस प्रकार से करते करते सारे भक्तों के अथक प्रयास से ये जो बता रहे हैं कल सुबह जो है ये जिसको 6,000 का ये कैसे मिलेगा तो 6,300 One moment I was thinking, because actually our Anattam Gopal Prabhuji was coordinator for us. He was sending yesterday morning, he was sending like 450 or something is to reach the target. Then I was discussing with Prabhuji. Prabhuji, actually 6,000 when we are saying it was looking easy. Now that 450 it is looking very big, more than 6,000. Because we most of the time we exhausted, but still with all the support of all the devotees, it cost 6,000. तो प्रभु कहते हैं कल सुबह तक जो है वो 450 को खत्म की 6,000 तो श्रीमानंद को तो ये वारंट करने से आपको बताया और ये कि उसका विकल्प है तो मतलब 6,000 तो हमको लग रहा है सरल है ये 450 पता नहीं लग रहा कैसे होगा ये भक्तों की कृपा से भक्तों की महाराज की कृपा से भक्तों के सहयोग से ये संभव हो पाया I like to thanks, appreciate all the devotees. Whole Kanaya Desh, I don't want to tell you this yatra there. Whole Kanaya Desh was, many devotees, like, I don't know, more 250, 300 devotees. Means all are devotees only. They are devotees or not devotees. They are all devotees. They all participated. And I really, my, what humble that for them. That's only to thanks them. सभी आप लोग जितने लोग सेवा में थे दुनिया से मैं सेवा कर पाया हम लोग उस सभी भक्तों का Thanks for giving this sloka opportunity to glorify this sloka. I don't know, I made that sloka to understand, but still I tried my best, which is I heard from the other devotees and few Prabhupada's interview, because that interview was made, it is very simple to understand to a lot. तो ये है कि बहुत आभारी हूँ सबकी सेवा करने के लिए और श्लोक पर तुम्हें श्रवण किया था तो वाले के लोग साक्षात्कार हैं वो और दो श्लोक के कारण उनको भी बात किया
Thanks for giving me opportunity. Hare Krishna. धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे पास समय है कुछ प्रश्न की जिज्ञासा किसी की आज के विषय पर कुछ जिज्ञासा कुछ प्रश्न परिप्रश्न से मेरा कोई टीका कोई समझ। यस हरे कृष्ण। तो क्वेश्चन है कि जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं तो एक अपने यहाँ मत करते हैं जैसे कि इसमें राय दिया वो दिन है कि यहाँ इंडिया में सिख फैमिली के साथ में सिख होता है गुरु अर्जुन होता है इसके अलावा दीक्षा ले सकता है तो उन्होंने मार कि दीक्षा लेते हैं ना सुना मैंने तो किससे पूछा आप? जैसे उनसे मैं राय लिया कि मैं यहाँ इंडिया में सिख होता है गुरु मान लिया। हाँ फैमिली तो यहाँ दीक्षा ले सकता है कि कहाँ पे? यहाँ पे भी कोई जैसे अमेरिका से आता है महाराज जी आते हैं अच्छा और दीक्षा ले सकते हैं तो उन्होंने माना। किससे पूछा आपने? तो सर आपको इंडिया का प्रमाण है। अच्छा मैं इंडिया जाता हूँ तो सामने सामने के साथ